Dear students, today we will start with the topic in Unit 3 of your syllabus. The topic is the Preamble of the Indian Constitution. As you know, the Constitution of India is a written document which originated from the Constituent Assembly that took 2 years, 11 months and 18 days to draft the Constitution. It was a very largest document on account of the fact that throughout the states or the countries of the world, Indian Constitution is the longest one, and the preamble, the very preface or the introductory part of the Constitution is called its soul. एहार आत्मा अटे संविधानर मुखबंध बा प्राक्कथन. It is the prolegomena to the Constitution. As we enter into a discourse, we have some brief introduction about the topic. Similarly, before knowing the Constitution, the nutshell, the brief introduction of the Constitution can best be known by reading the preamble, which is the composition of 86 words, and the preamble therefore is the very cornerstone of Indian Constitution. Suppose a foreigner who has come to India wants to know about a Constitution of India, then we certainly cannot place the very largest document, that is the Constitution. Rather, if we read out the preamble, he or she can best understand what the purpose of Indian Constitution is, what does the Constitution of India speak about the state, the individual, the relationship between the union and state government, the nature of the state, etc., etc. Therefore, it is imperative to know about the preamble of the Constitution, and if we analyze very categorically the preamble of the Constitution, we can discover many things what are inside the Constitution. So, coming to the preamble of the Constitution of India. The Constitution of India begins with a preamble which describes the nature and objectives of Indian state. The very purpose of preamble to describe the objective of the Indian state. As we have discussed already, India remained under British imperialism and colonialism for last 200 years, and thereafter through freedom struggle by the process of uniting Indians, then under the leadership of the great leaders like Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Gokhale, Tilak, etc., we got the independence, but the objective was to get self-rule. What Tilak said, that Swaraj is my birthright and I will have it. Gandhi also talked about self-rule, self-determination, and that self-rule, आमे चलाउछु देश आमरी आमरी नारे आमे नाउरी, एई जो निजे निजकु शासन करिबा रो व्यवस्थाटी को आमे गणतंत्र कहू, किंतु 1947 मसीहा पूर्वरु जेउ भाबरे भारत थिला ताहा ब्रिटिश साम्राज्यवादर अधीनस्थ थिला. तेणु objective of preamble to show the nature of Indian state, because before 1947 we did have a different kind of state, a state under subjugation under British yoke, and after 1947 we have had another kind of state, that is an independent state, because the transfer of power, the very term nowhere independence is written, that is transfer of power. जो अगस्त 15 तारीख रे at the stroke of midnight Pandit Nehru कहले जे long ago we had made a tryst with destiny, now the time has come that we shall redeem our pledge with nation. When the entire world falls asleep, India reawakens into freedom. तेणु ये जो कालजयी भाषण, ये जो भाषण रे आमे जो फ्रीडम कथा कहूचे, that is transfer of power from Great Britain or from the British master to that of India. एवं एथिरे objective of Indian state is
enshrined or mentioned. And K. Munshi, another great Indian constitutional experts, describes the preamble as the political horoscope of the constitution. एवं एई प्राकथन बा मुखबंध को भारतर राजनैतिक जातक बोली कहा जाए। जेमती कौनसी नवजातकर गोटे जन्म जातक तैयारी करा जाए अवधानक कतिरे सेथिरे जेमती लेखा जाइथाए तांकर पितांक नाम मातांकर केते गर्भकू सी भूमिष्ठ होइछंती तांकर वर्ण कौन जाति कौन केउ गाँर अतएव यही जो हॉरोस्कोप बा जातक गोटे जातकर बा नवजातकर समस्त विवरणी देई थाए तारी माध्यम रे तार ग्रह लग्न चलन इत्यादि विचार करा जाए। आमर संविधानर मुखबंधटी हेउची संविधान पाई भारत पाई यह हेउची एक संविधानर जन्म जातक। तेणु प्रिएम्बल देयरफॉर is a very integral part of Indian constitution, and Thakur Das Bhargav, another scholar, says preamble is the sole and most precious part of the constitution, because it is the very important part, precious part, because without knowing preamble we cannot know the constitution. Therefore, we have to harpen the basic principles that are enshrined in preamble so that we can reach a particular conclusion. Thus, the preamble of Indian constitution reads like this or begins like this. It starts with, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic. And I mind you, two new words have been inserted here. One is socialist, another is secular, in spite of three old words which were there during 1950 sovereign democratic republic. So, the full words are sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, faith, belief and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. And here the word integrity has been inserted by 42nd Amendment Act 1976, and in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution. So, let us discuss word by word what the preamble really tries to speak or imply. The word we the people, we have seen how very assiduously, very strenuously Indian people fought the foreign imperialism. During the time of Mughal, we had also fighting, and with the advent of the British colonialism and imperialism, the thing went for worst. And Gandhiji's leadership, starting from non-cooperation, ending with Quit India movement in three successive phases. In between, at the interval, you have civil disobedience movement in 1930, Lavana Satyagraha or Salt March, what is called. We found that India was contesting for self-rule, and as against British imperialism, as against in India we had monarchical system, because with the attainment of independence we even had more than 565 kings or monarchs living throughout India, having their kingdoms. So, when the independent constitution emerged from the Constituent Assembly, the founding fathers, the framers, the great men of India thought that they should just commit or devote or hand over the constitution to whom? Whether we have to hand over to the kings and zamindars of India, the feudal landlords of India, the common man of India, the secularists of India, or any Indian. So, who
should be that Indian, and it was much debated. And I have also discussed with you in previous classes, because the constitution makers in Constituent Assembly were experts in legal areas. There were as many as 28 law background people there. Therefore, they appropriately placed the word we the people, ame Bharatiya. When we call we the people, we transcend all sectarian barriers. आमे भारतीय कहले आमे बुझू एहा लिंगगत विभेद बा भिन्नता नहीं, जातिगत भिन्नता नहीं, संप्रदायगत भिन्नता नहीं, भाषागत भिन्नता नहीं। आमे शब्द रे एथिरे हिंदू मुसलमान बुद्ध जैन ख्रीस्टियान पारसी जो 7 धर्मर लोक रहिले भारत भितर सेमाने भारतीय। पुरुष नारी एवं आजिर दिन में थर्ड सेक्स जहाँ को आम कहूचे ट्रांसजेंडर सेमाने मध्य भारतीय। आबाल वृद्ध वनिता फ्रॉम प्रिंस टू पपर एवं भारत में रही जाइथिबा राजतंत्र अवसान घटी मध्य जो राजवंशी लोक माने मध्य रहिले सेमाने मध्य भारतीय। तेणु कौनसी विकार भाव अविचार न रखी समस्त भारतीयों हस्तरे संविधान को अर्पण करागला। सो वी द पीपल derives its strength from the philosophy of French philosopher Jean-Jacques Rousseau. During French Revolution, there was a famous slogan, Vox Populi, Vox Dei. Voice of the people is the voice of God. लोकमानंकर स्वर भगवानंकर स्वर। यह तिला फरासी राष्ट्र विप्लव रे फरासी दार्शनिक Jean-Jacques Rousseauंकर मंतव्य। तांको सहित आउरी 2 जण ग्रेट फिलोसोफर थिले वोल्टेयर एवं बैरन डी मॉन्टेस्क। ये 3 जनकर दार्शनिक तत्व रे फरासी राष्ट्र विप्लव संगठित होइतिला, जार मूल मंत्र थिला लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस एंड फ्राटर्निटी। तेणु ईश्वर जहा जनता सेया। तेणु एठी भारतर संविधानर मुखबंध बा प्रारंभिक सूचना आरंभ हेउची जनता जनार्दनंकर नामरू, जहा कहा जाउची वी द पीपुल। अदरवाइज इट कुड हैव बीन रिटन वी द लैंडलॉर्ड, वी द किंग्स एंड जमींदार्स, वी द पोस्टेरियर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, वी द एंग्लो इंडियंस, एनीबॉडी would have been there. Therefore, we have the founding fathers of the constitution have started with the word we the people of India, thereby giving each and every individual a right, a stake in the making of the government. So here it is fully democratic. A democratic constitution ought to have its origin with the people. Without people, we cannot think of democracy. As Abraham Lincoln says, democracy is a form of government which is of the people, by the people and for the people. Therefore, the word with the people belongs to the entire people, even individual one or collective one, without any discrimination. Then having solemnly resolved, पवित्र भावे आमे भारतीय पवित्र भावे संकल्प करूचु, रिजोल्यूशन संकल्प करूचु। कहीं संकल्प करने कह जाउची, कारण पुरातन भारत स्वाधीनता पूर्वर भारत प्राक स्वाधीन भारत एक पराधीन भारत थिला। तेणु आमे प्राणमूर्छा उद्यम करुथिले, स्वाधीनता संग्राम करुथिले, केमिति आमे स्वाधीनता सेल्फ रूल पाइबु। तेणु ताहा थिला आमर संकल्प, जहाँ पंडित नेहरू कहले लॉन्ग एगो वी हैड मेड ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, भाग्य सहित एक चुक्ति करितिलु। नाउ द टाइम हैज कम, समय उपनीत होइछि, दैट वी शैल रिडीम आवर प्लेज विथ नेशन। आमे राष्ट्र सहित जाति सहित जो चुक्ति करितिलु ताहा फेरी पाइबु, रिडेम्पशन। तेणु एठी आमे रेजोल्यूशन करूचु, आमे समस्ते भारतीय पवित्र भावे संकल्प करूचु। एहा रूसोंकर गोटे जनरल विल थ्योरी अछि, जोथिरे कहा जाए जे ऑल फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, इट इज द वॉइस ऑफ ऑल फॉर द गुड ऑफ ऑल। जेमती भागवत रे कालजयी बाणी कहा जाइछि जे सर्वे होइले एकमुख, डाकिले नारायण रख, बुड़ीगला डंगा बळी। तेणु एथिरे मध्य कहा जाउछि, हैविंग सलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को गठन करिबा।
एइटी पिले गोटे प्रश्न आसी पारे स्वाधीनतार भारत सुगठित भारत पराधीनतार भारत एक विभाजित भारत राजतांत्रिक भारत रही भारत में ब्रिटिश शासित भारत थिला तेणु आमे भारत को पुनर्गठन करवा आज जदि भारतर पुनर्गठन प्रश्न आसूची सरदार वल्लभ भाई पटेल द इंडियन बिस्मार्क और द आयरन मैन ऑफ इंडिया इज रिमेम्बर्ड द ग्रेट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी व्हिच हैज बीन इरेक्टेड अप टू 92 मीटर्स जो हेची गुजरात रे ताहा सूचई दउची जे केमिति प्रिंसली स्टेट मर्जर पाई सी भारत रे तांकर अवदान प्रथम गृहमंत्री हिसाब से अकलनीय बा ताहाकू कई अखंडनीय खंडन करि परिबे नाही तेणु भारत को गठन करिबा आमे एक नवगठित भारत ताकू आमर नागरिक माने संकल्प करूचंती भारत को पवित्र भावे संकल्प करूचंती भारत को गठन करिवे किभली भारत इनटू ए सोवरेन socialist secular democratic republic. First come to the word sovereign. The meaning of sovereignty, you know the concept of sovereignty, the word sovereignty has come from the Latin word superannus, supranus, तार माने होउची सुप्रीम सर्वोच्च and it was Jean Baudin, Jean Baudin, the French jurist, in his book The Republic, दुईटी रिपब्लिक बही पिले अच्छी गोटे हला प्लाटोंकर पुस्तक ना दि रिपब्लिक एवं जां बोदा फ्रेंच जूरिस्ट तांकर बही ना मध्य 1576 मसीह प्रकाशित दि रिपब्लिक इन दैट बुक दि रिपब्लिक जां बोदा हैज डिफाइंड और हैज coined the term, has brought the term into political philosophy. एवं जां बोदा define करूचंती what is sovereignty. To him, sovereignty is the supreme power of the state over citizens and subjects unrestrained by law. यह हेउची राष्ट्रर सर्वोच्च क्षमता जहाँ नागरिक एवं प्रजा मानक उपरे जाहिर करा जाए जहाँ आईन द्वारा मध्य प्रतिबंधित हुए नाही अप्रतिबंधित राष्ट्रीय क्षमता जहाँ राष्ट्र भितरे थिबा नागरिक प्रजा मानक उपरे जाहिर करा जाए एइटी गोटे प्रश्न आसीबो पिले राष्ट्र रे नागरिक सीए जीए मतदान दिए जो माने मतदाता नुहंती से माने अणनागरिक बा प्रजा तेणु जां बोधांकर एक्सप्लानेशन रे से कहवाकू चाहती जे राष्ट्रर एभली क्षमता रही जहाकू कई प्रतिबंधित करिपारिबे नाही ट्रामेल करिपारिबे नाही रेस्ट्रिक्ट करिपारिबे नाही इम्पीड करिपारिबे नाही अनइम्पीडेड और अनरिस्ट्रेन्ड बाय एनी पावर सो सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ताहले आमे बुझिबा राष्ट्रर सार्वभौम अछि का पाखरे वेदर इट इज द प्राइम मिनिस्टर or the council of ministers or the president who really is the bearer of sovereignty. So it is no other than the we the people जहाँ प्रथम धाड़ीर प्रियाम्बुल लेखा जाइछि पिले we the people आमे भारतीय तेणु आमे आमको चलाउछु so we are our destiny makers आमे आम भाग्य विधाता जेमती जनगण मन अधिनायक रे कहा जाउची भारत भाग्य विधाता ये भारतर भाग्य विधाता होउचंती सेही वी दी पीपल बा आमे भारतीय बा प्रत्येक जनता तेणु सोवरेनिटी हैज टू एस्पेक्ट्स वन इज इंटरनल सोवरेनिटी अनदर इज एक्सटर्नल सोवरेनिटी देश भितरे भारत तार समस्त नागरिक भारत रे थिबा समस्त भूगोल बा भौगोलिक एरिया ता उपरे भारत अखंड क्षमता रही कारण यह भारत सरकार अंतर्गत बाहर मध्य भारतर स्वाधीन राष्ट्र हिसाब रे निजे निजर केउ राष्ट्र सहित केउ भली संपर्क रखिबो ताहा मध्य भारतर इंडिपेंडेंट डिसीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
काली जो बाइडेन अमेरिका राष्ट्रपति सहित आलोचना करिसेंती वाणिज्य संपर्क रे अते भारत एक सार्वभौम राष्ट्र होइतिबारु ताहा मध्य निजस्व डिसीजन दब पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान चापरे पड़ी भारत निजर डिसीजन नेब नाही सो दैट इज एक्सटर्नल सोवरेनिटी सो सोवरेनिटी हैज टू स्पीयर्स वन इज इंटरनल सोवरेनिटी and other one is external sovereignty and moreover sovereignty is indivisible it is inalienable एहा ताकू केही ताकू बदलई पारिबे नाही ताकू केही विभाजन करि पारिबे नाही तेणु sovereignty is integral to a state be it small or big गोटे राष्ट्र अति छोटिया साइज हो सान मारिनो भली भटिकान सिटी भली तार मध्य सार्वभौमत अच्छी भारत भली चाइना भली विराट गणतंत्र बा विराट आदिवासी थिबा राष्ट्रर मध्य सार्वभौम अच्छी एवं यूनाइटेड स्टेट्स रे मिलित जातिसंघ रे प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्र को जने जने व्यक्ति रूपे इंडिविजुअल स्टेट को गोटे गोटे पर्सन हिसाब रे व्यक्ति हिसाब रे परिगणित करा जाय सो इंडिया to be constituted into a sovereign state. Other one is secular. I will discuss what socialist and the secular terms are. These are two terms added by 42nd Amendment Act. Come to first, democratic. भारत को एक सार्वभौम राष्ट्र रे गठन करिबा द्वितीय रे गणतांत्रिक राष्ट्र जेउठी the people matters, the common man matters because by democracy we mean it is the rule of the people by the people for the people. Abraham Lincoln 1869 रे ए डेफिनेशन बा ए कथाटी कहिचंती जाहाको आमे राजनीति विज्ञान रे पढ़िला बेले पढ़ू जे गणतंत्रर लोकमानंक पई लोकमानंकर लोकमानंक द्वारा तेणु इट इज डेमोक्रेसी इन चाइना वी सर्टेनली कैन नॉट से दे हैव ए डेमोक्रेसी इन नॉर्थ कोरिया दे हैव ए डेमोक्रेसी वी कैन से बिकॉज पॉपुलर लिबर्टी इक्वालिटी दीज आर absent because in a non-democratic country instead of emphasizing on rights of people they emphasize on the obligation and duties of the people. Therefore India has to be counted as a democratic state. When Britishers were there we had some liberty but we didn't have liberty for self rule what we otherwise call it democracy because the power to rule ourselves was transferred from Her Majesty's government to that of the Constituent Assembly and the leaders on 15th August. Therefore, from there onward, we consider ourselves as a democratic state. So, democracy believes in liberty, equality, justice, fraternity, freedom of speech, expression, etc., etc. So, then only we can say it is a democratic country. In other these countries of Arabian countries where some dictatorial systems are there, some strong monarchical systems are there. At present in Afghanistan, they don't have any democracy. That is, Taliban ruled Afghanistan. He who speaks against Islam is killed, is restricted. Therefore, you don't have democratic voice to rage against the rule. Even the in Hong Kong, few years back, 2 years back, there was an umbrella revolution. The people of Hong Kong raised slogan against the system because they wanted democracy. In China, there was a protest to have democracy in 1989 that is known as the ill-famous Tiananmen Square uprising where 3,000 people were butchered or killed or crushed to death by the then Chinese leader Deng Xiaoping. So, that is undemocratic state. So, in India, in preamble, we have a term, a word that is sovereign democratic state. So, the leadership, the government of India, the constitution intends to have a democratic state for ourselves. Then another is republic. It has come from the word republicanism. साधारण तांत्रिक व्यवस्था. The opposite term of republic is monarchy. राजतांत्रिक व्यवस्था. When head of the state is hereditarily selected or nominated or through the law of primogeniture, राजार बड़ पुओ राजा हबो. इंग्लैंड रे जेमती रानी अछंती राजवंशी लोक माने बकिंगहाम पैलेस रे बसचंती. जापान रे राजतांत्रिक व्यवस्था अछि. किछि अरबियन कंट्रीज रे रहिछि, नॉर्वे स्वीडेन रे रहिछि.
से सबू राष्ट्रगुड़िक राष्ट्रर मुख्य राजा बा राणी हुंती। यह वंशानुक्रमिक परंपरा अटे। एथिरे साधारण जनतांकर किछि न थाए, किंतु एक रिपब्लिकान व्यवस्था रे बा साधारणतांत्रिक व्यवस्था रे हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रर मुख्य प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे जनतांक द्वारा निर्वाचित हुंती। दैट वी कॉल ए रिपब्लिकन स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तांको परे परे अन्य माने आसुचंती, तांकर पुओ नाती अणनाती पणनाती के आसुनांती। अतएव भारत रे विभिन्न जातिर लोक राष्ट्रपति रहिचंती। एंड के.आर. नारायणन, कोचेरिली रमण नारायणन वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तेणु भारत रे विभिन्न धर्मर लोक, विभिन्न जातिर लोक आमर मध्य राष्ट्रपति रहिचंती, कारण आमे तांकु परोक्ष भाव में निर्वाचित करूछु। इट इज ए रिपब्लिकन सिस्टम। तेणु भारत को एक साधारणतांत्रिक, आमे हुए तो चाहिए इंग्लैंड अंडर रे 200 वर्ष शासन हेले आमे चाहिए बिलाती परंपरा बा ब्रिटिश परंपरा को अनुसरण करी आमे गोटे राजतांत्रिक व्यवस्था करिथान्ते। भारत रे तो 565 राजा थिले, गुजरात ठारू लगेई आसाम पर्यंत, एकड़े काश्मीर ठारू लगेई कन्याकुमारी पर्यंत, किंतु आमे राजतंत्र को प्रोत्साहन करिना है। भारतर विभिन्न राजा मध्य कालक्रमे पटेलकर नेतृत्व रे, सरदार पटेल नेतृत्व रे तांको राजतंत्र को भारत सरकार रे मिसेइचंती। एवं आमे देखिचे भारत एक साधारणतांत्रिक व्यवस्था को सम्मान देइछि। तेणु भारत रे आमे एक रिपब्लिकन सिस्टम वेयर हेड ऑफ द स्टेट, आमे जदि राष्ट्रीय स्तर रे यूनियन स्तर रे देखिबा, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंपोजिंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द नेशन एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स। राज्य स्तर रे देखिले हेड ऑफ द स्टेट हैपेंस टू बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट, एवं सी मध्य से मनोनीत होउचंती ए निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को द्वारा। तेणु वंशानुक्रमिक भावे राष्ट्रपति पुओ राष्ट्रपति होउनांती, गवर्नर पुओ गवर्नर होउनांती। इंग्लैंड रे कौन होउची ना राजा बा राणी से ही राजवंशीर लोक होउचंती। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्किकलिज्म और monarchy and republicanism, and the two new words which were inserted in the Constitution of India are the secular and socialist, and these two words were incorporated in Indian Constitution by 42nd Amendment Act 1976। 76 मसीहा 1976 मसीहा रे तत्कालीन प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी जेतेबेले राष्ट्र को राष्ट्रीय जरूरी परिस्थिति रे रखिथिले, सेही समय रे गोटे स्वीपिंग चेंज संविधान रे एक व्यापक परिवर्तन अणागला 42तम संविधान संशोधन द्वारा। एवं जेउथिरे कांग्रेस पार्टी जी सरकार रे थिले इंदिरा गांधी विरोधी दल वॉकआउट करितिला, बिना विरोधी दल रे मध्य ताहा गृहीत होइतिला, कारण सरकार रो कंफर्टेबल मेजॉरिटी थिला। एंड इंदिरा वाज दी देन कॉल्ड इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। Devakanta Barua, one congressman, told about Indira Gandhi. And during that time, in 1976, two new words were inserted. One is secular, other one is socialist, even 26 years after the commencement of the Constitution. The meaning of secular, it comes from the word secularism, or the broad connotation of the word is a state, Venkatraman says, which is neither religious nor irreligious but wholly detached from religious dogma, we call that state a secular state। जो राष्ट्र विधर्मी नुहे, अधर्मी नुहे एवं धर्म संपर्कित समस्त भ्रांतिरु दूर रे थाए, सेही राष्ट्र को आमे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहू। आकु जोग करिवार कारण थिला पिले भारत आमे भाबुतले 47 रे स्वाधीन, 50 मसीह रे संविधान कार्य कला, तापरे हुए तो सांप्रदायिक सद्भाव फेरी आसीबो।
सांप्रदायिक हिंसा हेबो नाही किंतु ये 26-25 वर्ष भितर देखागला संप्रदायवाद हिंदू मुसलमान मानकर जो सांप्रदायिक स्थिति थिला ताहा धीरे धीरे बिगिड़बारे लगिला एवं ताकू केमिति तत्काल दमन करा जिवो इंदिरा गांधी had been looking for an alternative as authoritarian she was even to contain her political opponent she did find a word that is secularism even as a solution to the problem of the internecine conflict between Hindus and Muslims, Hindus and Christians, and the word secularism was added. And in broad, secularism is understood as सर्वधर्म समभाव भारत रे जदि आमे धर्म निरपेक्षता कथा कहिबा वास्तव रे देखिले भारत एक धर्म निरपेक्षवादी राष्ट्र नुहे कारण इफ सेक्युलरिज्म believes in equality of all, equality of everything, then we have another article 2 article rights of minorities under article 29 and 30 of Indian Constitution. If we are secular आमे आगु गले पढ़िबा से विषय पिले फंडामेंटल राइट्स रे एवं ए सेक्युलरिज्म word was introduced with a view to subserve the purpose of the government of India and make the coexistence of different religion through the interventions of government. And another word socialist was also inserted. The word socialism, samajwad. What is socialism? Socialism, C.M. Jod defines socialism is like a hat, topi. Socialism is like a hat because which has lost its own shape because everybody wears it. तेणु समाजवाद कौन C.M. जोड कहउचंती एहा हेउची एक टोपी जहार which has lost its own shape तार जो शेप बा आकार को सी हरईची कारण ताकू समस्ते पिंधंती गोटे टोपी को हजार मुंडे हजार लोक पिंधंती छोट पिला पिंधुची बड़ मनीष पिंधुची अतएव से ढिला हो जाए तामाने इट इज ऑल पर्पस टोपी जहाँ को आमे कहिबा तेणु समाजवाद एथिरु जहाँ बुझी होउची समाजवाद हेउची जेउथरे समाजर भागीदारिता थाए व्यक्ति भागीदारिता न थाए आमर दुईटी तत्व पिले थाए एई प्रसंग रे बुझिबा पई द वन थियोरी इज इंडिविजुअलिस्टिक थियोरी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ फिजियोक्रासी फ्रांस रे जहाँ चलतिला अष्टादश शताब्दी रे द्वितीय फिलोसफीटी होउची फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म इनन्सिएटेड बाय कार्ल हेनरिक मार्क्स मार्क्स कर तत्व रे समाजवाद एवं सोशलिज्म बिलीव्स इन सोशलिस्टिक और द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द स्टेट राष्ट्र नियंत्रित उत्पादन एवं आवंटनर मालिकाना सत्व अतएव जेउटी राष्ट्र हेउची मालिक समस्त संबल समस्त संपत्ति तेणु आम आखि आगे आमे जहाँ देखुचे ताहा जदि एक समाजवादी राष्ट्र बोली आमे भावुचे ताहा भारतर निश्चिंत होइतिबो व्यक्ति कहबनी टाटा कहब नाही बिरला कहब नाही सिंघाणिया कहब नाही मफतलाल कहब नाही अंबानी कहब नाही दिस इज माइन दिस इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेमती रूसिया रे चलतिला यूएसएसआर व्हाट इज देयर जहाँ अछि सरकार सो कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्यक्ति मालिकाना सत्व परिवर्ते राष्ट्र मालिकाना सत्व and it has also political reasoning. Mind you that in 1950 when Pandit Nehru who had been suggesting India that we will continue India with this philosophy of democratic socialism गणतांत्रिक समाजवाद Nehru to some critics was a hypocrite because Nehru was always talking something which is theoretical but practically doing something which is against the theory. He was talking of merging democracy with socialism and it was Chakrabarti Rajgopalachari who is considered as the conscience keeper of Gandhiji. Chakrabarti Rajgopalachari, last Governor General of India, who could defy the Nehruvian vision and he said if India were to develop in 1950s स्वाधीन होइछि भारत संविधान कार्य होइछि कहले नेहरू जी भारत जदि विकसित हबो कैपिटलिज्म इज द ओनली सॉल्यूशन पिले
जहाँ आम 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन एलपीजी तत्व देखुचे वास्तव में ढमणा बुली बुलिकी से अगणा से आसला भारत किंतु भारत को गोटे तत्व आउ गोटे तत्वर मिश्रण करा जाइतला डेमोक्रेसी रे ब्लेंडिंग करा जाउतला सोशलिज्म व्हाट इज सोशलिज्म नेहरू कहले डेमोक्रेटिक सोशलिज्म द फिलोसफी ऑफ एडवर्ड बर्नस्टीन इंग्लैंड रो एवं coexistence of democracy plus socialism. If we talk of democracy, then we have equality and liberty always contradicts with this principle of sharing. जने जदि स्वाधीनता खोजिब एवं स्वातंत्र खोजिब सी तो चाहिए बढ़िया एवं समाजवादर तार सब कन्फ्लिक्ट आसो एवं ता परे परे नेहरू चलीगले 1964 26 मे जितेबाला ओडिशा आसते नेहरू बंगला उद्घाटन कले 25 मे रे 26 मे रे नेहरू वाज नो मोर देयर आफ्टर his daughter one and only daughter इंदिरा प्रियदर्शिनी came एवं तांको समय रे इंदिरा गांधी कौन कले ताकू कहले सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी नॉट ट्रू सोशलिज्म द सोशलिज्म वर्ड वी फाइंड हियर दैट वाज being practiced during the time of Indira Gandhi when she was prime minister that was following socialistic pattern of society and under its impact everything was nationalized एवं भारत रे कौन हला सबु जिनिसर जातीयकरण हला बैंक नेशनलाइजेशन हला प्रिवी पर्स रो उच्छेद हला बहुत गुडी कार्य हला जहाँ समाजवादी अर्थनीति रूसिया रे जेमती हुए कारण ए कॉन्सेप्टटा पिले आमे बरो करिचे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं जोथिरे राष्ट्रायत्त राष्ट्र नियंत्रित सबु रहे एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स एवं एहार नागरिक माननकु संविधान जोगई दब बा सिक्योर करिवो तांको पई निर्दिष्ट करिवो कौन कौन करिवो वन इज जस्टिस द स्पीयर द एरिया इज जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल से कहूची कौ स्तर रे संविधान न्याय दब लोक माननकु 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस आर देयर वन इज सोशल जस्टिस other one economic and third one is political. In collectivity we can say socio-economic political justice. In India we have had a tradition of negligence, discrimination or a kind of caste related barbarism. If we talk about the casteism and prevalence of it, then we have to go back to post Vedic age. वेदर परवर्ती अवस्था रे चारि वर्णर व्यवस्था आसिला जहाँ को आमे कहूचे 4-fold कास्ट सिस्टम एवं आवर सोसाइटी स्पेशली इन इंडिया हिंदू सोसाइटी इज ए कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी एंड आवर सोसाइटी फाउंड सो मेनी सोशल इविल्स सो मेनी फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज in view of the practice of casteism. You have do's, don'ts, caste related taboos, although in constitution under article 17 there is a provision of abolition of untouchability. The caste in public place may not have its relevance because all are equal or should be treated equal. But in so far as the private domain is concerned, जदि आमर पारिवारिक कथा हुए मनुष्य टिके जाति पणिया देखाए मे बी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल आर कास्टिस्टिक सो ब्रिटिश सरकार चाहिए with the introduction of Machiavellian education, English education and railway in 1854 Bombay ru Thane bureaucracy, English education and railway भारत रु जाति प्रथा उठे देवे कारण गोटे ऑफिशियल बड़ टेबुल रे सबु जातिर लोक आचंडाल ब्राह्मण बसवे सेठी कई जाति पचारिबेनी रेलगाड़ी हेले समस्ते चढ़ीबे रेलगाड़ी चढ़ीजे कहीं कार जाति पचारिबेनी इंग्लिश लैंग्वेज हेले समस्ते शिखिबे कारण भारतर पुराणा भाषा पिले थिला पारसी भाषा ताहा उच्छेद होइकरी ब्रिटिशर आसिला परे इंग्लिश लैंग्वेज हला ए तीनिटा द्वारा आमर गोटे लिबरालिज्म आसिला तेणु एई प्रसंग रे भारत रे गोटे सामाजिक न्याय कथा चिंता करागला कारण भारत एक अग्रगामी समाज नुहे पछुआ समाज तेणु सामाजिक स्तर रे फॉर ब्रिंगिंग सोशल इक्वालिटी वी हैव टू इरेज आउट
we have to wipe out, we have to ensure justice for all. That we call in broad sense social justice, that is called samajika nyaya. What then social justice is? Chief Justice P.B. Gajendra Gadkar, who defined social justice as, by social justice I mean abolition of all forms of social inequalities and to provide each one with equal social opportunities. Supreme Court रो प्राक्तन मुख्य विचारपति ताकू व्याख्या करुचंती, संज्ञा निरूपित करुचंती जे समाज रे प्रचलित थिबा समस्त प्रकार असमानता दूर करी प्रत्येक व्यक्ति को समान सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराइबा हेउची सामाजिक न्याय, and which is very much in practice under this government or that government, because people who are living below poverty line are suffering from social injustice. So on account of their caste, on account of their poverty, on account of their deprivation by particular caste group, आमे देखुचे प्रति स्तर रे पिले जातिगत कारणरू कोउटी काकू लंडा कर दिया जाउची, काकू रास्ता रे उल्लंघन करी चला जाउची। देखुथिबो विभिन्न जिल्ला रे बेले बेले रिपोर्ट आसुची, एगुडी को सामाजिक न्यायर परिपंथी। कारण गोटे मनीष आउ गोटे मनीष को बारबारिकली बिहेवियर करि परिबो नाही, कारण मनीषर गोटे आत्ममर्यादा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आर देयर। So social justice should be ensured for all. Next one is economic justice. It is a corollary of social justice, because unless we make economic self-sufficiency, at least make people stand on their own feet, लोकों को यदि आत्मनिर्भरशील न करेबा लोक छिड़ा हो पारिबे नाही। एवं भारतर स्वाधीनता सहित पंडित नेहरू कालजयी भाषण तो जहाँ देइतिले ता सहित मध्य कहितिले, विथ द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस विदिन 10 years वी शैल फाइट टू थिंग्स टूथ एंड नेल। 10 वर्ष भितरे आमे दुईटी कथा को दृढ़ भाव रे फाइट करी बा संग्राम करी दूर कर देबू। वन इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर, सेकंड वन इज फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। भारतरू क्षुधार ताड़ना बा कई भारत रे भोकिला आगामी 10 वर्ष तामाने 47 रु 57 मसीहा भितर 1957 भितर कई भोकिला रहिबे नाही एवं कई निरक्षर टीप दबा पार्टी रहिबे नाही। समस्ते लिखि पारिबे, एटलिस्ट नॉमिनली लिटरेट हेई पारे, कटक ताकू लिखले मध्य आमे साक्ष्य रखू। किंतु 75 वर्ष स्वाधीनता परे मध्य आमे सेही पछरे अच्छे पिले आशानुरूपक उन्नति एई दुईटी कार्य रे होई पारि नाही। एवं इकोनॉमिक justice is one among them. So we have to ensure the constitution also speaks about providing economic justice to the people reeling under underdevelopment, those who are backward. Even there are several schemes afloat by government of Odisha and government of India for empowering people living below poverty line. Still we have poverty galore. Next one is political justice. Gone are those days when we had British imperialism, and with the attainment of independence all people are made equal before law. There is equality before law, and these are the concept of political empowerment. We cannot deny political right to vote, right to contest election, right to speak, freedom of speech and expression. These all come, right to participate in public affairs, in politics, these are the political rights. So all Indian people जेमती ब्रिटिश थेला बेले सबसर्विएंट थिले, कारण इंग्लैंड रे आमर दादा भाई नारोजी द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया 1893 रे गोटे बही लिखचंती पिले, ता ना होची द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड ही वाज रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एवं तांकु छाड़ले लॉर्ड मेघनाथ देसाई गुजरात जड़े जाइछंती, हाउस ऑफ लॉर्ड्स रो मेंबर थिले। एमती किछि भारतीय इंग्लैंड रो पार्लियामेंट रे मेंबर थिले, किंतु मोस्टली इंडियंस वे आर नेवर ट्रीटेड इक्वाली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तेणु भारत स्वाधीन होवा सहित संविधान जेहेतु जाति वर्ण धर्म कौनसी आଳରେ बाछ विचार रखिला नाही, तेणु भारत रे समस्त नागरिकों को राजनैतिक समानता देला। तेणु राजनैतिक स्तर रे केही बड़ केही सान नुहे, प्रत्येक व्यक्ति निजर
फ्री पॉलिटिकल चॉइस एक्सरसाइज कर परिबो। एवं द्वितीय आस्पेक्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ एंड वर्शिप। से स्वातंत्र कथा कहूची से प्रथमटी है लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी Professor Lasky defines by liberty, I mean the eager maintenance of the atmosphere in which men have their opportunities to be at their best self। जतबेले व्यक्ति तार निज भितरे थिबा latent and potent पावर को डेवलप करि पारे, निज भीतर सामर्थ्य को विकसित करि पारे, कहार बाह्य बाधा विघ्न को भय न करी निर्विघ्न रे ताको आमे स्वातंत्र कहू। ताहा व्यक्तिर स्वातंत्र निजे निज स्टाइल रे बंचिबा दैट इज व्यक्ति स्वातंत्र। एवं एटी लिबर्टी ऑफ थॉट सी कहूची चिंता जगतर स्वाधीनता। आमे जहा विचार करिबा मने करा जाऊ मु गोटे पाठ पढ़ेबा पई प्रस्तुत होई आछि, मोर भावना रे मु पढ़ेबी, आई मस्ट नॉट इमिटेट एनीवन, आई शुड हैव माय स्टाइल, दैट इज माय लिबर्टी टू टीच द वे आई चूज टू। एंड एटी कहूची आमे जहा भाबिले भावनागत स्वाधीनता लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, जहा भाबिले मन रे रखिले ताको परिप्रकाश करिबा। आमे जहा भाबुचे आमर तो सामने छिड़ा आइतिबा लोकटी जानि परिबो नाही जे मु कोन मन रे भाबुची। मु जेतले परिप्रकाश करिबे वेदर व्हाट एवर यू से इज राइट और रॉन्ग, से जानिबो जे मु जहा भाबुतली परिप्रकाश कली। तेनु यू शुड हैव लिबर्टी ऑफ एज सिटीजन ऑफ इंडिया, वन शुड हैव लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, देन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। एगुड़िक पाखापाखि कथा पिले आमर विश्वास जहाँ रही किए कौथिरे विश्वास करिबो, किए कौ धर्म रे विश्वास करिबो, किए कौ बादरे विश्वास करिबो, किए कौ मार्गरे विश्वास करिबो, किए कौ दलरे विश्वास करिबो, ए समस्त एवं पूजा पद्धति। तेणु व्यक्ति स्वाधीनता, व्यक्तिर स्वातंत्र, चिंता चेतना विश्वास पूजा पद्धति ए समस्त दिगरे संविधान प्रत्येक भारतीय को एथिरे देला। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीफ एंड वर्शिप। एंड नेक्स्ट एरिया इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी समानता, इक्वालिटी इज अ वेरी controversial concept and some scholars have viewed it differently. Professor Lasky says equality is an absurd concept as a mathematician cannot be equated or treated equally with that of a mason, although the process of counting for both mason and mathematician are the same. जड़े राजमिस्त्री इटा गढ़ुची केते इंचर उच्च दैर्घ्य प्रस्थ कांथ हेले हम जड़े मैथमेटिक्स प्रोफेसर कहीदेवे, ताने आमे कहवा नहीं जड़े मासन जहाँ मैथमेटिशियन से। तेणु लास्की से वर्णना कले जे व्हाट रियली इक्वालिटी इज। लास्की कहले जे इक्वल पीपुल अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस शुड बी ट्रीटेड इक्वाली। सी तुमर ये विषयटी पिले पूर्व विषय अच्छी जितेबाला सार आलोचना करेंगे पढ़ेबे तुम जान। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट टॉपिक, बट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी स्तरगत एवं सुजोगगत समानता कथा कहा जाउछि। प्रत्येक व्यक्ति भारत रे सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय पाइबा सहित चिंता चेतना विश्वास पूजागत स्वाधीनता पाइबा सहित तार व्यक्तित्वर परिवर्धन पाई व्यक्तित्वर विकास पाई ताकू समानता मिलवा दरकार। कारण गणतंत्र अन्य एक पिलर बा खुंट हेउची कौन लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस फ्राटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आमे जहाँ जानिचे। तेणु इक्वालिटी रहिबो गणतंत्र समानता एवं प्रत्येक व्यक्ति सुजोगगत समानता एवं स्तरगत समानता। आर माने आमे बुझिबा नहीं जे समस्ते ताल कौन मैट्रिक पास करी सेठी पाठरे डोरी बांधिबे कि जीए जेउथि पाई सुजोग खोजुथिबो एवं ताहा पाई ताहा हेउची इक्वालिटी। सेई लोकटी ता पाई उद्यम करिबो आगु को बढ़िबा पाई जीवो। तेणु एथिरे राष्ट्र कोन करिबो लोकंकु सुजोग दबारे कार्पण्य करिबो नाही। स्टेट शुड नेवर बी माइजर और वेरी पुअर in providing the scope, and it is the duty of the state
to provide as much as opportunity to the aspiring people to grow more and more, and that will elevate the status. Otherwise, as citizen of India, all are equality before law, all are to be equally protected by law. So this is the concept of equality of status and opportunity, and to promote among them all. एवं समस्तंक भितरे समस्त भारतीयों भितरे ए धारणा को प्रमोट करैबा राष्ट्रर कर्तव्य संविधान रे यह कहा जाउछि। एवं नेक्स्ट आस्पेक्ट हेउछि फ्रैटर्निटी, भातृभाव। फ्रैटर्निटी आमे ग्लोबलाइजेशन रे पढ़िला बेले बुझू जे विश्व बा पृथ्वी बा वसुधा एक कुटुंब अटे, वसुधैव कुटुंबकम। वर्ल्ड फ्रैटर्निटी, स्वामी विवेकानंद while addressing Parliament of Religions in Chicago, the United States in 1893, addressed the gathering there, my brothers and sisters of America. So here Vivekananda became very much fraternal to the existing audience, and he was singled out as the great Indian apostle of peace. तांकु एते बड़ बड़ प्रोफेसर थिले मध्य विवेकानंद को एक भारतर गैरिक वस्त्रधारी साधु, कम बयसर साधु विश्व ना कले, कारण ही टॉक्ड नथिंग मोर दैन फ्रैटर्निटी। तेणु यही भातृभाव आमे तेणु भातृभाव को भारत रे आनिबा, एवं एथिरे कुहा जाउछि संविधान रे एकतार भाव, भाईचारा भाव, आश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्तिर आत्ममर्यादा, एगुड़िक मध्य पिले आर्टिकल 21 रे भारत रे रहिछि जे नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ, फंडामेंटल राइट विषय रही। तेणु प्रत्येक व्यक्तिर आत्ममर्यादा, तेणु वी डोंट हैव एनी राइट टू मेक अदर ऑफेंडेड, अन्य को आमे अपमानित करिवार अधिकार नाही। प्रत्येक व्यक्ति आत्ममर्यादा सहकारे बंचिबार अधिकार रही, एवं ता द्वारा कौन हम भातृभाव वृद्धि हम, एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन थिला पिले। इंटीग्रिटी शब्दटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जोड़ा जाइछि। अदरवाइज प्रियाम्बुल रो मूल वार्ड थिला 83, ए तीनटी शब्द पसिकरी ता हिछि 86 86, एवं एथिरे कहला जे व्यक्तिर डिग्निटी आत्ममर्यादा को सुरक्षा दबा, भातृभाव वृद्धि करिवो, एवं राष्ट्रर एकता को वृद्धि करिवो। राष्ट्र रे व्यक्ति स्वतंत्रता सहित भातृभाव, एवं जोड़ा होइतिबा शब्दटी होउछि इंटीग्रिटी बा संगति। 42nd अमेंडमेंट जेतेबेले देश इमरजेंसी अंडर रे अछि, इंदिरा गांधी कौन कले ए शब्दटी की जोड़िले, बिकॉज टू मेक इंडिया इंटीग्रेटेड। बाय दैट टाइम वी हैड यूनिटी, बट देयर वेयर सम फोर्सेस व्हिच हैड बीन posing threats to the hegemony of Indira Gandhi as well as the country. Therefore, to suppress her political opponents and to make India stable with iron fist, Indira Gandhi could decide to take up or to insert another word, integrity, भारतर संगति विपर्जय। तमें पिले जानूथिब वर्तमान सरकार गोटे यूएपीए लॉ अच्छी, आगुरी सेटा टाड़ा थिला, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ता ना एनआईची अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तेणु से एक्ट रे जी लागला सरकार ताकू बिना वारेंट रे बांधी देवे, कारण राष्ट्र अहित रे। तेणु इंटीग्रिटी शब्द राष्ट्रर संगति उपरे प्रश्न आसुची। एवं लास्ट रे पिले प्रियाम्बुल शेष रे कहूची, इन आवर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आमर संविधान प्रणयन सभा रे एही 26 नवेम्बर 1949 बा 26 डे ऑफ नवेम्बर 1949 आमे हियर बाय अडॉप्ट, आमे ताकू संविधान को ग्रहण कलु, एनाक्ट कार्यक्षम करैलु एवं आमको अर्पण कलु, एवं एई पूर्ण प्राण संविधान भारतर 1950 मसीहा 26 जनवरी रे कार्यकारी हैला, एवं दैट इज कॉल्ड
जनराज्य दिवस बा साधारणतंत्र दिवस बा रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. And this preamble, to sum up this topic, the preamble of India is undoubtedly the very important aspect or very important concept of Indian constitution. Any person who knows these 86 words can at best judge what the Indian constitution really wants to speak or give message to the mankind. So, with this I conclude this topic, and next class would be followed from the basic features of Indian constitution. Thank you all for this class.